सो हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज मैं सर शादीलाल एंटरप्राइजेस के बारे में बात करूंगा, बट बिफोर आई बिगिन, थैंक यू अ लॉट फॉर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई गॉट ऑन द नवकार कॉर्पोरेशन वीडियो। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया, बहुत सारी चेंजेस करी, सजेस्ट करी जो मुझे करनी चाहिए। तो कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करी हैं। एक कि मेरा चेहरा आपको दिखाई देगा। आई बी यूजिंग अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ टू केटर टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। thirdly एक प्रेजेंटेशन होगी जिसके अंदर एक डीपर एनालिसिस में दिखाने की कोशिश करूंगा, एंड वील टॉक अबाउट दिस स्पेशल सिचुएशन इन डिटेल। माइक वगैरह का एक और इशू था। आई थिंक इट विल गेट रिजॉल्व इन ड्यू कोर्स, बट बाकी इश्यूज को मैंने थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश की है। सो आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस सेशन and you really have a good time. So I'll just share my screen and we'll begin talking about Sir Shadi Lal Enterprises, which is one open offer, one stock which I've talked a lot about on my Twitter and at other places too, because I think that there is a very big opportunity that this stock presents. और उसी के बारे में एक डिटेल में मैं 15 मिनट के अंदर ये वीडियो क्लोज करने की कोशिश करूंगा, वेयर वी फर्स्ट टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑन दी ओपन ऑफर। ये ओपन ऑफर था क्या, इसमें हुआ क्या, क्या ट्रिगर्स है जो मुझे दिखते हैं, क्योंकि मुझे इतना ये स्टॉक पसंद है। उसमें मतलब मेजरली मेरे जो कॉन कॉल्स हैं, नोट्स हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर करी है उसको मैं एक बार आपके साथ एक कंसोलिडेटेड तरीके से शेयर करूंगा। देन वील डू सम सॉर्ट ऑफ अपसाइड असेसमेंट एक्सरसाइज, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मॉडलिंग नहीं हो सकती। आप ये नहीं बता सकते कि अगले साल रेवेन्यू कितना ग्रो कर जाएगा, उसके अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगे, वो करना बहुत मुश्किल है। तो एक अपसाइड असेसमेंट करनी चाहिए हमें कि अभी मार्केट क्या अज्यूम कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा उससे इधर इधर उधर जाते तो वो कहाँ पे वो वैल्यूएशंस को मूव कर सकता है, वैसी एक असेसमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। फिर कुछ एंटीथीसिस रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, एंड देन ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो दैट इज अबाउट सर शादीलाल एंटरप्राइजेस। बैकग्राउंड ऑन दी ओपन ऑफर इज वेरी सिंपल। इसके अंदर दो पार्टियां हैं। अगर आपको समझना है कि शादीलाल की चर्चा इतनी क्यों की जाती है, तो वन यू हैव सर शादीलाल एंटरप्राइजेस, which is a struggling sugar mill and a distillery which is based out of Shamli district in UP. The history of this place is that there used to be a jurist in India before independence whose name was Shadi Lal, और उनकी जो फैमिली थी उसको ब्रिटिशर्स ने, ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ द प्रीवी काउंसिल, सो ही यूज्ड टू बी लाइक अ लेजेंडरी सॉर्ट ऑफ जूरिस्ट, क्योंकि वो आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट के पहले इंडियन चीफ जस्टिस बने थे। उनकी फैमिली को ब्रिटिशर्स ने कुछ लैंड पार्सल दिया था शामली के अंदर, वंस ही रिटायर्ड फ्रॉम लाइक हिज रोल्स एज द प्रीवी काउंसिल जज, एंड ऑन दैट दे बिल्ट अ डिस्टिलरी। और क्योंकि ये फैमिली में थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन थी, दे डिडंट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड, दिस डिस्टिलरी वाज बेसिकली नॉट रनिंग वेल, राइट? सो बिजनेस इंटरेस्ट एक शुगर और डिस्टिलरी का है। उनकी रेपुटेशन ये थी कि इट्स अ poorly रन कंपनी, द promoters got it because it was a land that was gifted to शादीलाल by britishers, right? पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कंपनी का मार्केट कैप जो है, जब ये एक्विजिशन एक्चुअली हुई, तब वो अराउंड 130 करोड़ के था। इनफैक्ट वाज इवन लेसर, 130 वाज द कोटेड मार्केट प्राइस दैट त्रिवेणी सॉर्ट ऑफ कोटेड। और जो लैंड एसेट्स थी इस कंपनी के पास, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा थी। एसेट्स वर वर्थ 1200 करोड़। जो लैंड ही लैंड था वो 800 करोड़ का था, और आपको जो कंपनी थी पूरी वो 100 करोड़ में मिली थी, सिंपली बिकॉज इट वाज नॉट रन वेल। The promoters weren't doing enough about this company. And an interesting part about it was that it was right in close proximity to the Khatoli and Devband mills of Triveni, which is a bigger sort of player in this region. तो इस region के अंदर सबसे बड़ा जो sugar और distillery का player है उसका नाम है त्रिवेणी enterprises. They also have other business interests, but उनके बारे में बात कर लेते हैं। So it's almost $1 billion uh, conglomerate. It has interests in sugar, distillery, डिस्टिलरी के अंदर भी ना केवल द अल्कोहल विच इज इंडस्ट्रियल इन नेचर, बट ऑल्सो IMIL IMFL जो नॉर्मली दारू कंज्यूम की जाती है वो। पावर ट्रांसमिशन के अंदर गियर्स का इनका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, और इसके अलावा एक वाटर बिजनेस भी है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेके सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह का काम करते हैं। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट शुगर डिस्टिलरी प्लांट इनका जो है पूरी वेस्ट यूपी के अंदर, एक खटौली के अंदर प्लांट है, उसको सबसे एफिशिएंट माना जाता है। और इनकी रेपुटेशन है कि ये बहुत ही अच्छे कैपिटल एलोकेशन के अंदर है और अच्छे डिसीजन लेते हैं। तो इन्होंने यही यहाँ पे किया। इनको दिख रहा था कि लैंड और एसेट्स जो है 1200 करोड़ की है, और आपको कंपनी 100 करोड़ के आसपास मिल जा रही है। इन्होंने 130 पे एक ओपन ऑफर अनाउंस कर दिया। अब इसके अंदर भी बहुत लंबी टाइमलाइन है कि ओपन ऑफर किस तरीके से हुआ, इसके अंदर क्या क्या चीजें आई और धीरे धीरे कैसे चीजें बढ़ी। इट स्टार्टेड आउट विद टेक ओवर बीइंग अनाउंस्ड। एक साइड ऑफ फैमिली के शेयर्स
त्रिवेणी ने ले लिए, दूसरी साइड ऑफ फैमिली ने आखिर तक टेंडर नहीं किए। उनको टेंडर कराने के लिए बहुत सारी चीजें बीच में हुई, इट वाज लाइक अ कंप्लीट हॉस्टाइल टेक ओवर। बट व्हाट आई हैव डन इज के फेज ऑफ टेक ओवर के हिसाब से मैंने इसको अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया कि कौन से मंथ के अंदर क्या क्या टाइमलाइन रही थी। और फिर क्योंकि आई वॉज राइटिंग सो रेगुलरली अबाउट दिस ऑन ट्विटर, तो मैंने अपनी चीजों की भी एक लिंक असॉर्ट कर दी है एक टेबल के अंदर। what I can do is I can share this in the description of this video, and you can have a look through the multiple videos to understand the story better and how it has sort of evolved over a period of time, if that interests you. बट बेसिक स्टोरी ये है कि जुलाई के अराउंड सेबी ने अप्रूव कर दिया था इनका ओपन ऑफर। उसके बाद कुछ इंटरनल कॉर्पोरेट प्रोसेसेस हुए हैं, एक फार्मर एजिटेशन हुई है शामली के अंदर, वेयर जो प्रीवियस प्रमोटर्स थे उन्होंने कुछ 250 करोड़ ऐसे अमाउंट थे विच दे हैडंट गिवन आउट टू फार्मर्स। उसके लिए फार्मर्स ने एक बहुत लंबा प्रोटेस्ट किया, अबाउट एक महीने तक वो चला। द मिल वाज आल्सो शट डाउन फॉर अ फ्यू डेज। इवेंचुअली दैट गॉट ओवर, त्रिवेणी ने कुछ सेटलमेंट उनके साथ किया। They're going to give them that payment. A few letters of comfort were also announced from the Triveni side for them. फिर उसके बाद एक पोस्ट टेक ओवर रिजल्ट्स आए जो बहुत खास नहीं थे। बेसिकली त्रिवेणी ने ये कहा कि हमने जो पुराना उनका इन्वेंट्री पड़ी हुई थी शुगर की, क्योंकि शुगर मैन्युफैक्चर इस महीने में नहीं होती है, इस क्वार्टर में नहीं होती, क्वार्टर 3 के अंदर और क्वार्टर 4 के अंदर ही शुगर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो हमने वो इन्वेंट्री ही बेची है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। बट देयर वर सर्टेन चेंजेस इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जो मतलब मैंने अपने ट्वीट में बात की थी, तो आप वहाँ पे एक बार उसको जाके देख सकते हो। उसके बाद एक कमेंसमेंट ऑफ न्यू शुगर सीजन शुरू हो चुका है नवंबर में, एंड आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ये जो शामली की मिल है ये भी चालू हो चुकी है। सो त्रिवेणी हैज मैनेज टू एटलीस्ट स्टार्ट द ऑपरेशंस ऑन टाइम फॉर दिस। सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ दिस ओपन ऑफर एंड दिस एक्विजिशन, कि किसने अक्वायर किया, क्यों अक्वायर किया, एंड देन व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेज दैट वेर एट। बट अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रिगर्स यहाँ पे क्या है, व्हाई इज इट दैट आई एम एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, एंड व्हाट इज द टर्न अराउंड पोटेंशियल, एंड व्हाट इज द थीसिस। और ये मोस्टली हैज कम फ्रॉम द कॉन कॉल्स दैट we're talking about. So the first point is that because it was a poorly run company, there is a very low base to operate from for a efficient player like Triveni, जो बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, अपनी काम अच्छे से निकाल सकता है, शुगर की एफिशिएंसी को अच्छे से जानता है, डिस्टिलरी की एफिशिएंसी को अच्छे से जानता है। उनके लिए बहुत ही लो बेस पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड इवन इफ यू लुक एट द लास्ट सीजन, उनका क्रशिंग सीजन बहुत खराब था, जो इसी टाइम पे शुगर केन गन्ने का क्रशिंग होती है जिससे कि शुगर और अल्कोहल और बाकी सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो इस टाइम पे ही हुआ था लास्ट ईयर, एंड इट वाज नॉट गुड बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, बिकॉज फार्मर्स के साथ उनकी ऑलरेडी प्रीवियस प्रमोटर्स की कुछ इश्यूज चल रहे थे बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, एंड दैट इज व्हाई दे डिडंट कंप्लीट लाइक दैट एंटायर सीजन। तो ये एक ट्रिगर नंबर 1 है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ही खराब कंपनी है जिसके अंदर आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। दूसरा ट्रिगर है कि जिस प्राइस पे त्रिवेणी ने एक्वायर किया और जिस प्राइस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है ये बहुत ही चीप है। सो त्रिवेणी acquired it at around 266 rupees per share. That was the open offer price. Currently it's at an 18% to 22% premium from that price, and this is what the management has said here. अगर आप देखें तो as far as the price that was paid for the shares has been acquired, we did a valuation exercise internally and looked at what the asset could be worth. We're happy with the price we paid, and it's going to be significantly accretive acquisition in the short term and definitely in the long term. So they're thinking that even from the perspective of 1 to 2 years, एक शॉर्ट टर्म में भी ये बहुत ही अक्रेटिव एक्विजिशन है, तो वो इसको टर्न अराउंड जल्दी करके और पे बैक वगैरह जो बाकी सारी चीजें फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको बेटर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि एक मैनेजमेंट कह रही है कि हमने भी वही एसेट अक्वायर करी है जो अगर आप शेयर होल्डर हो तो आप अक्वायर कर रहे हो, एंड वी कैन सॉर्ट ऑफ डू दैट चेंज इन इट वेरी क्विकली, एंड वी फील दैट इट इज वेरी चीपली वैल्यूड। थर्डली, शामली का जो लैंड है वो बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एकरेज जो होती है, मतलब पर हेक्टेयर पे कितनी यील्ड आती है, कितने ज्यादा आप गन्ने उगा सकते हो, उसकी किस तरीके की खेती हो सकती है, दैट इज द बेस्ट इन द स्टेट ऑफ यूपी। एंड यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, 3 मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। यूपी में सबसे ज्यादा होती है बिकॉज पेरिनियल रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, वाटर का क्राइसिस नहीं है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर है। उसके अंदर यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि इट्स द बेस्ट स्टेट, इट्स द बेस्ट रीजन विद इन द स्टेट ऑफ यूपी। एंड देयर इज ऑल्सो अ नंबर दैट द कंपनी सॉर्ट ऑफ गिव, और वो बहुत सिग्निफिकेंटली अप था फ्रॉम द नंबर्स दैट वर देयर फॉर द अदर फैक्ट्रीज। सो अगर मान लीजिए खटौली में भी एक फैक्ट्री है, देवबंद में भी एक फैक्ट्री है और एक शामली में फैक्ट्री है, द फैक्ट्री एट शामली, द एकरेज दैट द फार्मर्स आर एबल टू लाइक get,
दैट इज द हाईएस्ट, सो दैट मीन्स कि फैक्ट्री की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपको आसानी से प्रोक्योर होगा और वो बहुत अच्छे से किसान आपको ला के दे सकेंगे। सेकेंडली, एक क्योंकि यील्ड बहुत ज्यादा है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि एकरेज और यील्ड सबसे ज्यादा है, तो त्रिवेणी यहाँ से कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी सोचेगा। Because what you can do is that you can get like a lot of sugar cane for this mill at like a very at a very effective price, and since the yield is very high, that bodes well for the future in terms of higher operating capacities. तो अगर आपको रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से मिल जा रहा है, वो रॉ मटेरियल बहुत इफेक्टिव है कि अगर आप मिल का एक एरिया होता है, राइट, जहाँ से मतलब फार्मर्स अपना ट्रांसपोर्ट करके मिल तक ला सकते हो शहर के सेंटर तक। अगर फार्मर्स के पास कैपेबिलिटी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ एकरेज, तो वो ज्यादा चीजें ला पाएंगे। दैट मीन्स हायर डिस्टिलेशन कैन हैपन देयर, हायर लाइक शुगर प्रोडक्शन कैन हैपन देयर, एंड दैट कैन लीड टू हायर लाइक रेवेन्यू एंड अदर नंबर सॉर्ट ऑफ कमिंग इन फॉर द कंपनी। तो इसलिए हायर कैपेसिटीज भी त्रिवेणी यहाँ पे लाना चाहिए, एंड दे हैव सॉर्ट ऑफ पॉइंटेड दैट आउट इन द कॉल, दे हैवंट गिवन अ गाइडेंस फॉर इट, but they said that that too bodes well for the future in terms of operating higher capacities, and it means we'll have to invest in some more capex, right? But we'll make those decisions in a very prudent manner, like we do, क्योंकि त्रिवेणी कैपिटल एलोकेशन के लिए अच्छे से जानी जाती है, वो एक टाइम पर इस चीज को करेंगे। नाउ दिस इज द नंबर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सो ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। खटौली में 770 क्विंटल पर हेक्टेयर का द रेट is there. For Shamli, this is at 825 to 850, and for Ramkola factory it's at 550 quintals. So existing जो बेस्ट आपकी फैक्ट्री है, वहां पे जो रीजन है उसके अंदर द कैपेसिटी इज, जो आपका एकरेज है, दैट इज एट 770 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, और यहाँ पे द it moves up to 850, 825 to 850, which means that the raw material is in place for you to expand and really take this somewhere, right? तो कैपेसिटी एक्सपेंशन के भी कुछ प्लान्स हैं। द मैनेजमेंट has just told us that the distillery there was in a very bad condition when the management sort of took over, and what they're trying to do is bring in certain efficiencies. Once that efficiency comes in, they will be looking at capacity expansion. But if capacity expansion happens here, it can be a game changer for this company, because जब हम वैल्यूएशन एक्सरसाइज की बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत ही सस्ती है कंपनी। नाउ व्हाट आई डिड वाज आई वेंट थ्रू ऑल द लिस्टेड शुगर कंपनीज इन इंडिया, और मैंने 5 बेस्ट जो शुगर मिल्स है उनको सिलेक्ट किया, एंड आई ट्राइड टू लुक एट कि हाउ मेनी मिल्स डू दे ओन, हाउ मेनी डिस्टिलरी यूनिट्स डू दे ओन, तो शुगर कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्टिलरी कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका एबिटा मार्जिन कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन कितना है, प्राइस टू बुक कितना है। आपको एक चीज दिखाई देगी कि डिस्टिलेशन कैपेसिटी शादी लाल की इस पूरी लिस्ट में सबसे कम है, बिकॉज दे जस्ट ओन वन मिल एंड वन डिस्टिलरी यूनिट। पर अगर ये कैपेसिटी एक्सपैंड हो जाती है तो दैट कैन चेंज थिंग्स वेरी सिग्निफिकेंटली। इफ यू लुक एट बनारी अमन शुगर्स, दे हैव अ डिस्टिलेशन कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू शादी लाल, but they're able to earn very good margins on that, and that is because of certain efficiencies that they have in their processes, and also कुछ एरिया का भी हिसाब रहता है कि how they're able to procure things and do that. Now that is with regards to the distillation capacity, the capacities they have for production. There's clearly like land available, there's clearly resources available to sort of turn it around and expand that. But when you look at the valuations too for this company, both on a price to book basis as well as price to sales basis, you see that it's significantly undervalued as compared to the other sugar companies. Now there can be a case made where you say that you can't compare Triveni's price to book with Shadi Lal's price to book because it's a holding company, it has 1,000 other businesses. But let's look at Balrampur Chini, which is a completely like sugar company only. वहां पे बस फर्क इतना है कि the number of units and the number of mills they're higher, but it doesn't take away from the fact that if your asset is trading at 0.1 times book value, it is extremely cheap. There is no chance that it can actually go down from there. There's only upside potential that is really available. Although there can be a correction which significantly corrects it like by 20-30%, but in a longer sort of time frame, it's very difficult for the price to go below that. And you see it across the valuation metrics that the company has. EBITDA थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा नंबर दिख रहा है, बट बाकी सबके अंदर आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली सबसे पोअरली रन शुगर कंपनी है, and it has the cheapest assets in the industry, and it has assets in a region which is strategically very important because of the acreage that we talked about right now. This is the recent update. इसके अंदर बस सिग्निफिकेंट चीज ये है कि शादीलाल के अंदर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स की जो बात हो रही है कि क्या कुछ
लैंड बेच दिया जाएगा, क्या उससे प्रोसीज आएंगे, वो सब देयर इज नो डिसीजन दैट द कंपनी हैज मेड। और जो मैं लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा था, उसके ऊपर कंपनी ने अपडेट प्रोवाइड किया है कि this is a quarter where there is no production, there's absolutely no production, there was very little sugar that was left with Sir Shadi Lal, जो इन्वेंट्री पहले की रखी हुई थी, all of that was left was sold and the funds were utilized, and therefore they resulted in a loss at that level. क्योंकि this is a subsidiary of Triveni, the loss that incurs in Shadi Lal is also reflected in the numbers of Triveni, इसलिए त्रिवेणी के भी numbers इस बारी थोड़े से खराब आए थे. They've given this as a sort of major reason, but again it's not a production quarter, तो इसके अंदर आप इन्वेंट्री ही बेच रहे होते हो, तो इसलिए शुगर कंपनीज का यूजुअली ये क्वार्टर टू अच्छा नहीं रहता है. बट दिस इज द बेसिक कॉन्टेक्स्ट. आपने ओपन ऑफर के बारे में समझ लिया, यू ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट कि why exactly is this asset so cheap, and किस तरीके से ट्रेड कर रहा है as compared to some of the other assets. Let's do some upside assessment, right? कि क्या exactly इस कंपनी के अंदर हो सकता है in a very realistic case, in a base case and in a bull case, and then are the valuations sort of taking that into account right now? Uh, Even in a very realistic case, we're saying that the company will manage to make money for investors. Why exactly am I saying that? क्योंकि रियलिस्टिक केस में दो तीन चीजें होंगी, दो तीन इवेंट्स प्ले आउट करेंगे. एक आपकी रियलाइजेशन फॉर योर शुगर विल इंक्रीज, रियलाइजेशन फॉर योर अल्कोहल विल इंक्रीज. जो एट पार त्रिवेणी जिनको भी बेचता है, उनको ही आप भी बेचने लगेंगे, बिकॉज यू बिकम पार्ट ऑफ दैट कंपनी ओनली. सो आपकी रियलाइजेशन वहां से बढ़ेंगी. सेकेंड इज कि शायद 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज इट्स अ कैपेसिटी विच इज वेरी वैल्यूबल. ऑलरेडी इतना ज्यादा पेमेंट त्रिवेणी ने किया है इसके लिए, तो दे वुड वांट लाइक एटलीस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू बी देयर, राइट. थर्डली, लैंड बैंक जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि प्रॉब्ली उसको थोड़ा सा सेल ऑफ कर दिया जाए, थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया जाए, या फिर मतलब अगर यूटिलाइज भी नहीं किया जाता, कुछ सेल ऑफ किया जाता है, उसे प्रोसीड लाके बैलेंस शीट पे डाली जाती है. तो शादीलाल बैलेंस शीट इज वेरी वीक बिकॉज ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द अदर थिंग्स दैट दे हैव देयर. वो एक तरीके से बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होगी इन अ वेरी बेस केस. तो बैलेंस शीट becomes lighter also because त्रिवेणी ने एक्चुअली इस फार्मर एजिटेशन को एंड तब किया जब उन्होंने कुछ पेमेंट टर्म्स दिए फार्मर्स को. 250 crores of payments were pending from the last 14 years at this company, and Triveni gave out like a certain amount of money to these farmers and they're trying to pay it off more. So जो other liabilities वाला section है वो बहुत light हो जाएगा. So automatically the balance sheet will become much leaner and it will support the company in terms of the interest costs and other things sort of going down in the P&L, right? So it is, so naturally, even if these things sort of play out, it should result in some sort of revenue expansion as well as a multiple expansion. But चलिए हम इसके बारे में फिर आते हैं. We'll talk about the realistic case only and we'll try to sort of model it. सेकेंडली वील टॉक अबाउट द बेस केस जहाँ पे हो सकता है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन हो. दूसरी बात है कि लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर ही वो कैपेसिटी लैंड बैंक के अंदर और ज्यादा यूटिलाइज हो और उसको अल्कोहल ज्यादा बेचने के लिए यूज किया जाए, बिकॉज अल्कोहल इज लाइक डिस्टिलरी जो कैपेसिटीज होती हैं दैट रिजल्ट इन मच मोर हायर आरओसी नंबर्स एंड मच मोर हायर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू शुगर. तो अगर वो डिस्टिलरी कैपेसिटी एक्सपैंड होती है और उसको बेचा जाता है, that will be much better for the company. Thirdly, they use the volumes that they produce here for their IMFL business. Triveni recently entered into IMFL business with two brands. One of them is called Matsya and the other one is called Crafters Gin or something like that. अगर वहां पे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिकर के लिए सप्लाई किया जाता है फ्रॉम दिस मिल, ऑटोमेटिकली डिस्टिलेशन कैपेसिटी जो है आपकी बेटर यूटिलाइज होगी. इट विल रिजल्ट इन लाइक हायर margins and it will result in higher capacities being utilized in terms of revenues also moving faster, right? तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपका जो मल्टीपल आज आपको दिख रहा है ये मेनी फोल्ड्स एक्सपैंड होगा सेल्स मल्टीपल के लेवल पे, या फिर आप कैश फ्लो, प्राइस टू कैश फ्लो के लेवल पे देखें तो ये कई तरीके से यहाँ से एक्सपैंड होगा. बट अगर थर्ड एक बुल केस ले लें जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही है, एक तो यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपनी company's assets, it moves it to a better valuation on the basis of book value. अगर बुक वैल्यू के बेसिस पे वैल्यूएशन आ गई कि बुक वैल्यू मान लीजिए 1200 करोड़ की एसेट्स है इस कंपनी के पास और उसको इतना अच्छा यूटिलाइज कर लिया गया कि नाउ इट इज बीइंग वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कि बुक वैल्यू इसकी है तो प्राइस पहुंच चाहिए पीबी बेसिस पे इसको 1 का मल्टीपल मिल जाए, 1.5 का मिल जाए. तो देन दैट इज लाइक अ कंप्लीटली bull case. It's very far away, definitely, but it's something that can happen too. It's in a range of possibilities. It is something which can occur. Secondly, something interesting might happen where Triveni might merge its alcohol and sugar businesses with this company and list it separately. बिकॉज त्रिवेणी के पास अभी
चार अलग अलग तरह के बिजनेसेस है. The power transmission business is growing really rapidly and it does like EBITDA margins of more than 30%. Now, if you have to have a business like that, आप कोशिश करोगे कि उसको आप सेपरेटली लिस्ट कर दो. अगर वो बिजनेस सेपरेटली लिस्ट होता है, दैट कैन रियली चेंज द गेम इन टर्म्स ऑफ शादी लाल बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द शुगर ऑपरेशंस ओनली. और शुगर के सारे एसेट्स हो सकता है कि इस कंपनी के अंदर डाल दी जाए. अगेन इट्स अ वेरी फार फेच सॉर्ट ऑफ थिंग, बट अगर ऐसा होता है तो दैट कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएशन फॉर द शेयर होल्डर्स. सो अब अगेन इसमें देखिए कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, बट अपसाइड क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, वो बहुत अनलिमिटेड है. और मैं डाउन साइड लिमिटेड कैसे है उसको रियलिस्टिक केस के एक असेसमेंट से दिखाता हूँ. सो व्हाट आई डिड हियर वाज आई लुक्ड एट द शुगर कैपेसिटी ऑफ त्रिवेणी. आई लुक्ड एट देयर शुगर रेवेन्यू. आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द पर यूनिट रियलाइजेशन दे हैव, और वही रियलाइजेशन से मैंने शादीलाल के रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करने की कोशिश की. सिमिलरली फॉर डिस्टिलरी की कैपेसिटी कितनी, रेवेन्यू कितनी, डिवाइड करके पर यूनिट पे निकाल के उसको शादीलाल की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके देखा. एंड व्हाट आई गॉट टू वाज कि अगर ये बस रियलाइजेशन पे ही हायर रियलाइजेशन पे बेचते हैं और 100% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लें, द रेवेन्यू दे कैन अर्न इज 733 करोड़. करंटली दे आर डूइंग रेवेन्यूज ऑफ अबाउट 462 करोड़. अगर उस रेवेन्यू पे मल्टीपल बिल्कुल एक्सपैंड नहीं होता है, and it still says that like 0.4 times multiple, the estimated valuation for Shadi Lal moves up to about 300 crores. Currently, it's valued at 168 crores. It's almost a doubler on the basis of like very basic triggers playing out. Where bigger company has taken over, it gives you like the same realizations because you're selling in the same market. एंड आपका 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है. हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात नहीं की, हमने मल्टीपल एक्सपेंशन की बात नहीं की. ऑलमोस्ट अ डबलर ऑन जस्ट दैट बेसिस. दैट इज व्हाई आई फील दैट देयर इज सिग्निफिकेंट वैल्यू that is there. Now, if there is so much value on the table, why isn't it that so many people are sort of utilizing that value and coming forward to sort of see it? उसके अंदर हमारे एंटी थीसिस और रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं. पहला रिस्क फैक्टर है कि अगर मर्जर हो जाता है शादी लाल और त्रिवेणी का, क्योंकि इट्स अ रेगुलेटरी हैसल, राइट? यू आर रनिंग टू कंपनीज which almost do the same thing. At least like one vertical of your major company does the same thing as this company which is a subsidiary. और आपसे आपके लिए बड़ा आसान है कि आप मर्ज कर दीजिए दोनों को and you sort of try to run them together. If that merger happens, it will be very bad for Shadi Lal shareholders, because Shadi Lal is 168 crore company, Triveni is 8,000 crore company. So वो swap ratio is never going to be in our favor, right? So if a merger happens, it's not going to be good, right? When the management was asked about it, this was back in the open offer period. They said that they didn't have any immediate plans. इसमें एक और एडेड फैक्टर ये है कि शादीलाल हैज मेनी वेरी ओल्ड शेयर होल्डर्स जो 80 साल से उस कंपनी के अंदर हैं पहले से. एंड देयर वाज अ थिंग दैट वी गॉट फ्रॉम द एजीएम कि वो उन लोगों को फाइनेंशियली लॉस नहीं पहुंचाना चाहते हैं. They don't want to build that bad reputation in a new region for themselves, and therefore it's very unlikely that a merger will actually take place. But if it happens, it might happen that Triveni sort of turns Shadi Lal around and then goes for that merger. अगर तब भी होता है तब भी शादी लाल शेयर होल्डर्स का एक सिग्निफिकेंट नुकसान होगा इसके अंदर. तो दैट इज नॉट पॉजिटिव. सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मैनेजमेंट ने कहा हम अभी मर्जर के बारे में नहीं सोचते हैं, बट अगर मर्जर होता है तो इट विल नॉट बी गुड. सेकेंडली, again, the thing that I talked about in the last video, if Shadi Lal's resources are used for supplying cheap alcohol and sugar for the businesses of Triveni, that is going to create another problem. क्योंकि आप essentially ऐसा कुछ कर रहे होगे कि आप चीप रिसोर्सेज आप सस्ते में माल लेके आगे उसको IMFL और IML ब्रांड्स बनाने की कोशिश करोगे. दैट कैन क्रिएट लाइक अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बिकॉज इट कंप्रेसेस द मार्जिन्स दैट यू हैव. थर्डली, इट्स अ ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक. शुगर जो है वो सिक्लिकल सेक्टर होता है. इसके अंदर साइकिल्स बहुत लॉन्ग डेटेड होती है. यूजुअली 6 to 7 years का बैड फेज चलता है और फिर 1-2 साल की अच्छे पीरियड्स आते हैं. दिस सॉर्ट ऑफ चेंज व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दैट एथनॉल पॉलिसी, और एथनॉल की तरफ के शुगर प्लेयर्स जो थे वो रीडायरेक्ट हो गए. बट फिर भी इफ यू लुक एट द रिसेंट क्वार्टर, almost all of the sugar companies have not performed well on a year-on-year basis, and there has been a significant decrease in their revenues as well as profitability. If this continues, we are playing against a very strong cycle, and Shadi Lal can stay where it is at, even though like certain changes would be taking place at the company. So these are the three major risk factors that we have talked about. Even if you look at the results of Triveni and Balrampur Chini is another like
गोल्डन स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ शुगर कंपनीज, उन्होंने भी बहुत खराब नंबर्स इस बार डिक्लेयर किए। 60% का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन है, 166% का प्रॉफिट डिक्लाइन है। और शादी लाल ने भी खराब नंबर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बिकॉज उनके रेवेन्यूज थोड़े से डाउन थे, बिकॉज दे वर जस्ट सेलिंग द इन्वेंट्री एंड नॉट एनीथिंग एल्स देयर। नाउ there are certain risks to this story. There's an upside which, if we are able to capture, can really change our lives, right? तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए there should be some sort of risk management framework that we should decide, right? And the risk management thing is very simple. It's about what I talked about in the Navkar video too. Buy close to a very strong support. The strong support here is the open offer price of 262. Currently, last traded price on Friday, which was I think 9th of November, not sure, or 14th of November, in fact. The last traded price was 320 rupees. The premium over open offer price currently is at 22%. It's not a large premium. The stock has gone up to 400 rupees before. तो इतना बड़ा प्रीमियम अभी है नहीं. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर मार्केट में कुछ और करेक्शन आता है, दी स्टॉक सॉर्ट ऑफ टम्बल, that will give you a very good opportunity to buy it at a no risk zone. अगर आप 262 के आसपास कहीं पे इसको परचेज कर पाते हैं, it can really lead to massive wealth creation, at least from my standpoint. So nothing here is a buy or sell recommendation, but if you're able to, if you want to manage your risk in terms of the buying of the stock, तो उसके लिए आपको इसको ओपन ऑफर प्राइस के आसपास खरीदना चाहिए, and that can lead to like a very good outcome that way. So that was it in terms of this video, and I really hope that you enjoyed it. Do let me know any more suggestions you might have for this channel, or do let me know any other videos you might want me to cover. I'd be happy to take all of them up, and I hope I didn't take like a lot of time. So yeah, happy. Thank you.